को पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय सभापति जी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से मेरी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी बातें आपके सामने रखी। और ये ऐसा भी होता है, जो पहला वक्ता बात करते हैं, ये बफे सिस्टम टाइप, जो पहले जाते हैं पंक्ति में उनको ज़्यादा खाना मिलता है, जो बाद में वहाँ पर जाएंगे थोड़ा फिर उधर इधर की बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं जो मैं खासकर आपसे एक 30-40 साल से अपनी पहचानत है। आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका थे, फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, फिर ये हमारा सौभाग्य है कि आप 3 बार कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर चुन के आए। तो सभापति जी, विचारों के सदन राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपकी विदाई के मौके पर मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। ये तो परमानेंट हाउस होने के कारण संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की अलग हैसियत है। आज जबकि देश आजादी के 75वें साल पर उत्सव मना रहा है, इस हाउस पर भी देश के लोगों की निगाहें पड़ रही है। आपके लिए न ये हाउस नया रहा है, न ही हम लोग नए हैं। 19 सालों तक आप राज्यसभा में सांसद रहे। आपके साथ हमारे लगाव का एक दूसरा भी कारण है, जो मैंने पहले ही बताया कि 3 बार राज्यसभा के सदस्य आप चुने गए कर्नाटक से। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जय आंध्रा आंदोलन चलाने से लेकर अब तक अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने कई भूमिकाएं निभाई। 1978 से 1985 के बीच 2 बार आप आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार के दौरान 2008 से 2014 के बीच आप स्टैंडिंग कमेटी होम के चेयरमैन भी थे। मैं विशेष रूप से आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आप भूल तो नहीं जाते क्योंकि बहुत से आर्टिकल आपने लिखते ही रहते हैं और अपने पुराने विचारों को भी दोहराते हैं। हम हर पेपर में किसी ना किसी दिन वक्त वो पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आपने जो आर्टिकल 371J स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम कर्नाटक के लोग जब आपसे अपील किए, ये बहुत दिन से पेंडिंग है और ये जो है एनडीए सरकार में इसको नकारा गया था, लेकिन उसको किसी ना किसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक एरिया को उसको एक पुष्टि देने के लिए, प्रगति करने के लिए हम उस आर्टिकल 371J को
यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते थे, तब आपने फौरन उसको स्वीकार किया। यहाँ तक भी यहाँ पर ऑफिस नहीं था तो हम लोग कर्नाटक भवन में जाके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी बुला के हम सभी बैठकर उस आर्टिकल 371J को आपने स्वीकार किया और वो अमेंडमेंट के रूप में इस सदन में उस सदन में आया। ये भारी जो यूपीए सरकार में जो वायदा किया था वो निभाए, उसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं अगर वो याद नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत बड़ा काम करने के लिए हमको हिम्मत दी और सपोर्ट किया। राज्यसभा में आपने 11 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे और आपने इस बात की पैरवी भी की कि सभी प्रमुख राज्यों में अपर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। इसी तरह महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनाने और कई दूसरी बातें आपने खुलकर कही। मुझे भरोसा है कि सरकार ये काम जो आप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं उसको पूरा करेगी। जब मैं लोकसभा में विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था तब आप शहरी विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री थे। उसके बाद जब 2017 में आप राज्यसभा के चेयरमैन बने तो मैं भी 2020 में नेता विपक्ष के रूप में आज यहाँ खड़ा हुआ। राज्यसभा में आने के बाद बेशक हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया, इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ मैं उन बातों को उठाना नहीं चाहता, एक चंद लाइनों में अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा और सब माहौल में भी आपने काम किया। आपके संरक्षण में राज्यसभा के अब तक जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर नमूद किए कहे 14 फुल सेशन हुए। आपने मानसून सेशन 2018 से एमपीज के लिए ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा कराई। संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में सदस्यों को बोलने का मौका आपने दिया। कई सांसदों को अपनी मातृभाषा में बोलने की
सहूलतें हो गई। आपने नॉन हिंदी इलाके के सांसदों को हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित किया और उनको प्रोत्साहित भी किया। आप जिस रोल में रहे, गांव देहात के लोगों की बात उठाते रहे। अटल जी की सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। हमारी यूपीए सरकार ने इसे आगे बढ़ाया क्योंकि ये गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद था। 1987 में अटल जी ने कहा था कि राज्यसभा में रहे बिना राजनीति की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। आप तो भाग्यशाली हैं जो इसके सदस्य और संरक्षक दोनों बने हुए हैं। सदस्य भी बने और संरक्षक भी बने। ये जो अटल जी का कहना था वो आपने पूरा कर दिया। सभापति जी, आपने कई बार ये बात कही है कि पब्लिक लाइफ में राजनेता कभी रिटायर होता है न टायर्ड होता है। जो बात प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहे, तो आप रिटायर भी नहीं होंगे पब्लिक लाइफ से और टायर्ड भी नहीं होंगे, काम करते रहेंगे। और मेरी आशा है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से विदा होने के बाद भी आप नागरिकों के बीच और सक्रियता से काम करेंगे। इस देश के लोकतंत्र, समता, समानता, संविधान के मौलिक तत्वों पर युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी विदाई के मौके पर मेरे मन में कई विचार आते हैं। कोरोना संकट के दौरान भी आपने काफी प्रयास करके हाउस चलाने का प्रयास किया। सिटिंग अरेंजमेंट को बदला गया, सांसदों को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठाने का काम भी करना पड़ा और एक एक यानी यहाँ पर जो बेंच पे एक या दो और बहुत से सदस्यों को ऊपर बिठाया गया, चंद को पार्लियामेंट में बिठाया गया, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़े। कोविड के पीरियड में भी आप अपना काम करते रहे। आपने 2018 में रूल्स की समीक्षा का जो काम आपने आरंभ किया था, उस पर सभी दलों से विचार कर काम आगे बढ़ना चाहिए। कई नियमों को बदलने की जरूरत है। आज हाउस में जो बातें होती हैं उसका पूरा देश और दुनिया देखती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की विशिष्ट भूमिका है। मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की टीवी दोनों का मर्जर नहीं होना चाहिए था। जनता के सुख दुख से जुड़े मामलों पर गंभीर चर्चा हो, सर्वोत्तम समाधान भी निकले, ये बात देश के सभी लोग चाहते हैं। राज्यसभा अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र भले हो, नजरिए में भले कुछ फर्क हो, लेकिन सबका लक्ष्य और सपना देश के इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, एकता कायम रखने का होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसके लिए आपका योगदान जारी रहेगा, क्योंकि आप पहले ही कहे हैं बहुत बार कि मैं रिटायर्ड नहीं होता और टायर्ड भी नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान में रख के इस इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और भारत की एकता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आपके स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना करते हुए इस पंक्ति के साथ आपको बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है।
कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद खड़गे जी। मैं व्यक्तिगत रूप में बफे को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, सहपंक्ति भोजन के पक्ष में हूँ और विश्वास भी करता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहिए, लाइन में कहीं बैठे वहाँ तक आपको सब मिलेगा ऐसा, मगर अपना अपना स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों को खाना है। श्री डेरेक बी ओब्रेन, तृणमूल। प्लीज डेरेक जी, प्लीज बोलिए, बैठ जाए। Sir, प्लीज प्लीज, डेरेक। just after independence in undivided Andhra Pradesh, those who owned agricultural land were, how do they show how well off they are, how important they are in that area? They had a very interesting way of showing. They didn't show, it's just that they had the number of bullocks you owned, the number of pairs of bullocks you owned. So if you owned 2 pairs of bullocks, you were quite well off. If you owned 4 pairs of bullocks, you were even better off. And a few families owned 6 or 8 pairs of bullocks. So one such family owned 8 pairs of bullocks. So good so far. But one day, one of these bullocks, one of these the animals, they went totally nutty, and the bullock actually gorged a lady in the stomach. The lady was carrying a baby or a 1-year-old boy. Dropped the child, obviously. The lady was taken to the hospital and the lady passed away. And the child lost his mother at the age of 1. This is your story, sir, of an early loss. And from that early loss, you have done whatever you have done, which we can find in not only Wikipedia entries, but in a glorious career you have had. And I don't want to go there today because I think we have lots of speakers, so we'll all talk about that. Sir, I'm sure that will make a good story for your autobiography, which you must write. I've had many experiences with you, but a few I'm going to talk about today, and I certainly don't expect answers for any of those, but maybe one day you will write an autobiography. So this child who lost his mother in these tragic circumstances from this agricultural family, cut to September 20, 2020. To me, that was a very important day in my outlook about you. And maybe you'll answer that question someday in your autobiography. On September the 20th, 2020, the day this House passed the farm bills, you were not on the chair. You were not. Sir, you're the only Vice President who has served
4 terms as a Rajya Sabha MP. You're the only Vice President who has visited every Indian state, include all 28 states, including the states in the Northeast. Sir, these we know, but someday you will give us the answers, because when I first came here, you used to sit this side. And I remembered on the 2nd of September 2013, I think your seat was just here. On the 2nd of September 2013, you made a passionate speech on petrol and diesel. So one day you'll tell us in your autobiography, why then? Let's not go there. Sir, on the 1st of March 2013, I remember one more speech of yours. You led the discussion, Mr. Jaitley was that side, and you made an intervention for about 5-6 minutes on phone tapping. We tried Pegasus last few years, but we didn't get a discussion, sir. And you have really given us one piece of advice, opposition and government, is that talk to each other and solve. I think that's the one take we take away, that you always, in the meetings, you know, sometimes what happens in chambers stays in chambers, but you used to always say, talk. And you would talk in the same tone. You talk to the government, talk and solve. You talk to opposition, talk and solve. And nobody is perfect. You would have tried hard to get our Honorable Prime Minister to perhaps answer one question in your full tenure. That didn't happen. Sir, earlier today, a point was made about productivity in Rajya Sabha. Yes, sir. You are the chairman of the Rajya Sabha. We want to congratulate you. If you look at the productivity numbers and the number of bills passed, sir, you were there. But there's another side to this argument. And as you leave today, sir, we would urge you, because you have at least 20 more years to offer in public life. So these are the thoughts, sir, to urge you, because there's another school of thought who think that Parliament has become a deep, dark chamber. And you've often advised us, send bills to committees, why only 6 out of 10, no, why only 1 out of 10 bills are going, send bills, scrutinize these bills. And sir, so these are issues which I'm sure you will address, because I know, autobiography or no autobiography, you will speak your mind and you will guide us. Sir, of all the happy things we remember is the great food you served us and the great host you are. Not only you, but I think equal credit should go to Mrs. Naidu. The wonderful, every time you hosted any MP, all of us in the Vice President's house, sir, it was absolutely wonderful. And since I eat mostly non-vegetarian food, that became even better. Sir, we wish you, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, and everybody, we wish you and Mrs. Naidu happy years ahead. And as I remember once mentioned that you are the chief outside, but you have a home minister at home who actually controls whatever is going on. Sir, the Prime Minister very nicely put it in his speech, where he said every word you said is revered and this is preferred. Yes, sir. We'd like to add to that, sir. We wanted you to stay here longer because we hope your going was actually deferred. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Derek. Sri Tiruchi Siva. Mr. Chairman, sir, there are some moments
which are unavoidable, but at the same time unacceptable. This is also one. Sir, only in the agony of parting do we look into the depths of love. Sir, today we are bidding you farewell, only because it is a customary one, that's all. But we can never do so, sir. So on behalf of my party DMK and my fellow colleagues here from my party, who have a special regard for you, I shower upon you profusely our thanks and appreciations and congratulations for your tenure in this August House as chairman. So there are many things to recollect. We would have worked you sometimes seeking opportunities. Instead of doing anything which is very harsh, you were just one word with affinity and command, Shiva, made me to sit down. Nothing else you resorted to. I've already many times told you that also. Sir, in Tamil there is a word, Arima Nokku. There's a look of a lion. In the forest, not all animals stand and look back. Only the lion. It only can look back the path it dreaded. It only can bring behind it all the animals in the forest in a disciplined manner. You are a lion, sir. You can look back, for you have left a very great track. Sir, you started your life as a very good student. Then as a student leader, wedding to yourself to an ideology. Then you started climbing the ladder, sir. You never came down. You were a member of the Legislative Assembly. You became the leader of your party. You became a member of this August House. You were in the opposition bench. You were a minister. And now you decorated the second highest position in this country, the Vice President, the second authority, constitutional authority. And sir, we had great times with you as the chairman of this House. Sir, one thing you will also appreciate. We might have disturbed you. We might have shouted. Of course, in the path of democracy, seeking opportunities, insisting for debates. But at the same time, when during our discourse, never we have come down the decorum of this House. We have appreciated many a time that the debate in this House by all the party members are par excellence. Sir, on this occasion, I think this is the right time and right place to put on record three things. Number one, our honorable leader of opposition told that only in Rajya Sabha a member can speak in any of the 22 languages in the 8th schedule of the Constitution, and that you only brought it into action. Wherever you go, you have advocated for the regional languages to cherish. You advise everyone, please protect, enrich your mother tongue. At the same time, learn other languages also. Nothing wrong in that. Based on that only you've done. And other two things, which many of our colleagues themselves would not know, but I would like to put on record today, not to the members in this House, but also to the people outside in the world. Sir, there has been a customary and convention in the Parliament. It's a British legacy. Whenever a member or a minister lay a paper on the table of the House, the convention is, I beg to lay on the table of the House. See, I am a product of the self-respect movement, sir. So such words were indigestible. We were not able to digest. Sir, I have represented to your predecessors many a time, to the government also many a time, but nobody bothered. Sir, I must appreciate and thank you. You only removed that word there. Why in a democratic republic anyone should beg anyone? So you removed that word, sir, and now with heads held high, every member and minister are just tabling their papers, sir. Not beg. They lay the paper on the table of the House. They raise to lay the paper on the table of the House. And second, sir, all notices we send to the Secretariat or addressed to the Secretary General. And many might not have noticed, sir, when we sign,
it is yours faithfully. It doesn't suit a member of parliament to write to an official, yours faithfully. It's not a school. I represented it to you, sir. You asked what can be the substitute. I said yours sincerely, and now all our notices are having yours sincerely, sir. I don't know about the other house. I don't want to tell that even if it be. Sir, you upheld the dignity of the members. As well as always you were very much interested in upholding the decorum and dignity of this house. Sir, we cannot forget your days in this house as chairman. There are many other things. And personally, I cannot forget you. I can recollect you many a time. Whenever I see S.V. Rangarao on the screen, I will be reminded of you only. That majestic look and walk, only you resemble. And you will be in Chennai. That also I know. You will be very close to us. I request you, sir, Derek told you will write. I say, please write an autobiography, which will be your real contribution to the posterity of this country, sir. Only one word, sir. We will miss you. We will miss you, sir. Thank you very much. Thank you, Shiva. Sri Sanjay Singh. धन्यवाद सर, आपने आज मुझे इस भावुक अवसर पर अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, जब मैं इस सदन में आया तो विपक्ष में होने के नाते कई बार अपने मुद्दों को लेके आपके गुस्से, आपकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मैं आज पूरे देश को इस सदन से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली सांसद हूं जिसको सबसे अधिक प्यार आपका मिला है, सबसे अधिक गाइडेंस आपकी मिली है, सबसे अधिक समझाने का काम इस चेयर से हटने के बाद आपने किया। जब भी कभी चैम्बर में गया, आप एक अलग इंसान थे। घर पे गया, एक अलग इंसान थे। चेयर पे आपने हमेशा समझाने का काम किया कि सदन के मर्यादा के हिसाब से चलो। मुझसे इन 4.5 वर्षों में कभी भी कोई भूल, कोई गलती हुई हो सर, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। और उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था सर। उसमें जो कुछ भी था, कभी देश के किसी मुद्दे पर, कभी जनता के किसी मुद्दे पर, जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपका एक वाक्य आपने इसी चेयर से बैठ के कहा था, ये हाउस, ये राज्यसभा का सदन उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और आपने उस भावना को हमेशा इस सदन में जीवित रखा। और आपके वो वाक्य थे, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। आपने सारी भाषाओं में, यहां तक कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं थी, उसमें भी हमें सदन में बोलने की अनुमति दी। ये आपकी एक वैचारिक सोच का प्रतीक है सर, और इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर, आप हो सकता है इस चेयर पे आगे हम लोगों को ना दिखें, लेकिन मैं एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे प्यार से भोजन के लिए हम लोगों को बुलाते थे, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जब भी दिल्ली आप आए, दिल्ली का सांसद होने के नाते हम चाहेंगे उसकी सूचना हमें मिले और हम सारे लोग आपके साथ बैठें, आपसे हमेशा सीखते रहें। बहुत बहुत आभार आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और सदन के हमारे सभी सांसदों की ओर से। आपके उज्जवल भविष्य की प्रभु से ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय। डॉक्टर सस्मित पात्रा। Honorable Chairman, sir, it's a very poignant day. It's a very heavy day.
And before, I don't want to bid you farewell, honestly. I honestly don't want to bid you farewell. I just hoped you would stay on and on. But then life has its own transitions. So I want to first thank you on behalf of my party, Biju Janata Dal, on behalf of our leader, Shri Naveen Patnaik ji, for your service to the nation, for your service to this country, for your service to this house, and for being the great man that you are, with your simplicity, with your charm, with your dedication, with your commitment, for having done so much for all of us. Please. So it's been only 3 years. It's been only 3 years that I have come to know you personally, but it seems like a lifetime. Time is short. Honorable Prime Minister was speaking about how you have always promoted youth, how you have promoted the regional languages. Honorable LOP, Honorable Members of Parliament have been speaking. I'll not elaborate on that. I brought evidence to the House today, sir. The evidence I'm going to lay on for everyone to see. The day was February 7th, 2020. The day before, I had been to you in your chamber and you said, Sasmit, why don't you speak in Odia? It's your mother tongue. Speak more. The next day I spoke in Odia, my first 0 hour, on a specific topic. You ran the chair, sir, and you said, Uttam Kahuchanti. You spoke well. After a few minutes, I get this brief note from you, sir. What does it say? Evidence. Uttam Kahuchanti, written by you, signed Shri VenKaiah Naidu, to me, Sasmit Patra. So why I brought this evidence? There are many evidences. But why I brought this evidence to the House is because this was a note for you. For me, it's a memory of a lifetime. It will stay with me as long as I am there. And that is what Shri VenKaiah Naidu ji means to all of us. So promotion of youth. There are many young members who have come in very new to the House. And I just wanted to probably take this opportunity to tell you how you have promoted the youth members of Parliament, the young members of Parliament. In August 2020, suddenly I had a phone call in the evening saying that I have been appointed to the panel of Vice Chairman of the Rajya Sabha. I was surprised. I said, I'm only 13 months into the Rajya Sabha. So you were the person when I called in the evening, sir, do you think I'm capable of presiding over this August House? Do you think I'll be ever able to do justice? You said, I believe in you, I stand by you, you do your work, you keep working hard. That was Shri VenKaiah Naidu ji. Sir, I will not take much time. You've always been a friend of Odisha. Whenever we have brought matters of Odisha before you, sir, you've always given us a patient hearing. Whenever there have been matters of Odisha that have to be raised in the House, you were always open to the idea of how we can develop more and more. Whenever our new members of Parliament from across party lines used to come up, you used to encourage them. So one thing I must tell you, sir, your presence in the chair is very reassuring. Your presence in the chair gives us strength. And your presence in the chair, you have inspired and motivated not only the members of Parliament of the Rajya Sabha, you have inspired and motivated every youth of this nation. And I say that with a great measure of humility. Sir, at the end, I'd just like to tell you today I'm reminded of the words of Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. I think today, sir, you have miles to go, and as Derek ji said, you have more than 20 years of public life left. You will continue to inspire us every day. You will continue to cherish your memories every day. With these words, I thank you for your wisdom, thank you for your leadership. On behalf of Biju Janata Dal, our leader, Shri Naveen Patnaik ji, we thank you for your service to the nation. Thank you. Sasmit ji. Sri Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. Sir, needless to mention that every Telugu person today is proud that this August House is chaired by a Telugu man.
on behalf of 9 crore of Telugu people, that you have made us proud, really proud. I speak, in fact, on behalf of 9 crore people, and we all feel proud of you, sir. Sir, your political, because I hail from Nellore district and you also hail from Nellore district, and your political, in fact, I have attended so many public meetings as a student, and we all inspired. And your political rise is inspirational for all of us, not only Nellorites, even for the entire country, sir. When you rise, we all feel that as if we have risen. This is the inspiration what we have got, sir. As Honorable Prime Minister has said, and your articulation and the command over all the 3 languages, Telugu, Hindi and English, and I don't know the other languages, and Tamil also, and really appreciate it. And sir, the entire nation would recollect that August 5th, 2019, when the emotions ran high, and this House was discussing the abrogation of Article 370, and your presence on the chair gave strength to the smaller regional parties like us at that point of time to speak freely and help pass the resolution, sir. Sir, I take this opportunity to appreciate your support that you have extended to the committees, standing committees, and how under you the parliamentary standing committees gained importance, and you have reviewed from time to time and gave inspiration to all of us, sir, the chairmen as well as the members of the standing committee, sir. Sir, Sabhapati Mahoday, sir. Sir, one incident I would like to recollect at this point of time, one more minute, sir. 6 साल पहले जब मैं इस सदन में आया था, almost 6 years back, sir, तब मैं आखिरी कतार में बैठता था, सर, the last row. सर, मुझे लगता था कि बोलने का मौका शायद नहीं मिलेगा. Never thought, sir. Never thought that I would get. लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया. मुझे ही नहीं बल्कि सभी not only me, sir, सभी नए सदस्यों को बोलने का मौका दिया, सर. सर, मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं. एक और कारण है, सर, जिसकी वजह से मैं आपका आभारी रहूंगा. आपने मुझे चेयर पर बैठकर सदन चलने की योग्य संज्ञा मुझे मौका दिया, सर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सर. आप हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यह कामना करता रहूं. बहुत बहुत थैंक यू. के केशव राव, डॉक्टर केशव राव, नॉट देयर. श्री अहमद अशफक करीम, प्लीज. आरजेडी, आप हमेशा है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, आपने मुझे ये मौका दिया, और ये सुनहरा मौका मैं किसी तरह से खोना नहीं चाह रहा था. आज मैं अप्रैल 2018 से इस सदन में हूँ. वाकई आज का जो माहौल है, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा. ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों और जमहूरी निज़ाम की तरह हाउस को चलाने के बदले आज लोग कुछ एक अजब सा माहौल है. आज इस तारीखी और यादगार अलविदाई प्रोग्राम के मौके पर खुशी और गम के जज्बात का मिला जुला असर अपने वजूद समेत पूरे मजमे में मैं देख रहा हूँ. और ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों, आपने जो मोहब्बत दिया है उसके नतीजे में है. खुशी इस बात की है कि हमारे जमहूरी निज़ाम इस कदर मजबूत और खूबसूरत हैं कि इसके पाबंद आप जैसे कद्दावर लीडर और तारीख साज रहनुमा भी हैं. मुद्दत सदारत मुकम्मल हुआ और खुश दिली से न सिर्फ अलविदा कह गए, बल्कि अलविदाई तकरीब को आप जीनत भी बख्श रहे हैं.
और आपसे पहले के हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया और वह आइंदा भी यही रहेगा। हर कोई अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद बावकार चेयर दूसरों को सपुर्द कर देता है। यही सिलसिला चल रहा है, दूसरों को हवाले कर देता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, हमें बहुत कुछ इससे सीख मिलती है। खुशी इस बात की भी है कि आपने अपनी पूरी मुद्दत में तमाम अरकान यानी माननीय सदस्यों का न सिर्फ एहतराम किया बल्कि उन्हें अच्छे माहौल में अपनी बातें सदन में रखने का मौका भी दिया और जमहूरी रवायात व इक़दार को कायम रखने की हत्तल इम्कान कोशिश करते रहे। लेकिन गम के जज्बात का भी दिमाग और दिलों पर गहरा असर है। आपकी यादें, आपकी बातें मुद्दतों तक रहेंगी दिलों पर, और इस मजबूत मुल्क के सियासी और तारीखी पन्नों में आपका नाम अदब से लिया जाता रहेगा। हम सब दुआ करते हैं कि आपकी अगली जिंदगी भी सेहत व आफियत के साथ गुजरे और समाज व मुल्क को तरक्की की राह पर लाने की आपकी कोशिशें जारी रहें। गूंजते रहेंगे तेरे अल्फाज मेरे कानों में, तूने तो आराम से कह दिया अलविदा दोस्तों। थैंक यू करीम जी। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you, sir. I endorse whatever has been spoken here by my esteemed and senior colleagues, including the Honorable Prime Minister and Leader of the Opposition. Nevertheless, I consider this as my bounden duty to place the appreciation, gratitude, and best wishes of my party, CPIM, on record. Sir, as you know, we are from the opposite sides of the ideological spectrum. But, sir, I have no hesitation in lauding your clarity of conviction. Sir, you belong to the category of statesmen with an organic thinking. What has impressed me the most, sir, I would speak what I feel at heart. I won't speak a word which is not part of my thought process. Sir, you are a living example of the great diversity of this nation. And that is the underlying thread of the unity of this country, sir. Sir, I have a reason why I say so. When there is a chorus that is shriller, louder for uniformity of behavior, culture, language, and even food, sir, you stand tall as a lamppost of rich diversity that the country is and should be, sir. Sir, can I submit you, sir? Even the spotless Dravidian attire shows that. Sir, many have spoken about the hospitality, sir. So I have my personal experience of almost 3 decades. Javadekar-ji, more than 3 decades. Please note the point. Sir, as a journalist, I have observed you shifting your base from Andhra to the vortex of the national politics. Sir, you are simply the king of hospitality. I don't think anybody else in this house can match you. Sir, I would relish those days when we had sumptuous non-vegetarian meals. I stress on that, non-vegetarian meals. I am vegetarian too, as much as I am non-vegetarian. At your house and at the BJP office. Nadaji, please note the point. Many of my juniors in journalism are pleasantly surprised to think about the menu at that time, sir. Sir, at that time, prawns and cooks used to fly from Vijayawada and Guntur to Delhi. Sir, I think I would be missing in my duty if I don't spell out this point. There is a feeling amongst many, sir, that
you would go down in the history as the president the nation has missed. So this is something which I thought I should say. Sir, yes, sir, I have been seeing the house from inside and outside, from above, sir. Sir, I can't think of a chairman who got involved with the nitty-gritty of the house like you, sir. I've not seen any chairman, sir. Many used to come here, sit for an hour and leave. But you used to get involved, even to the minutest aspect of the house, sir. This, I think, sir, a long, grueling journey from a village from Andhra, becoming an MLA, MP, minister, and also helping the organizational structure of a political party. And, sir, with this long experience, you could even read the minutest emotion in our minds. Sir, one important aspect in your approach was that you are cut for the parliamentary democracy. I should say that. And you are leaving at a time the parliamentary democracy needs you more. I would say that, sir. Derek was saying about parliament becoming a dark chamber. I don't know what he actually meant, but I feel that you are leaving at a time when we require you more, sir. Sir, your habit of disagreeing but allowing us and respecting us the right to express our view was something which should be talked about, sir. Sir, one more thing, sir. Small political parties. That is something which I need to say, because you believed and you had the conviction that though the sum of the parties may be insignificant in numbers, their voice are relevant and vital to the existence of this nation as a plural polity. Sir, I would be failing in my personal duty if I don't speak about my experience, sir. Please give me 1 minute, sir. Sir, after making my maiden speech on the following day, sir, you should allow me to say that because Honorable PM was saying that you have the pension to promote young and new members, sir. On the following day, I got a call from Vice President's house. I was pleasantly surprised and I was little concerned or worried also. And after a few seconds, you were on the line, sir. And you told me that you may not agree with me fully, but my speech was wonderful and you appreciated the homework which I did, sir. Sir, I didn't even share this to my family because my family would think that, you see, my character has changed after becoming a member of parliament. Sir, but you followed it up. And you also said something, sir. You said that after reading all the newspapers, you were so sad that not even a single newspaper wrote a single line about my speech which impressed you, sir. Sir, you didn't stop there, sir. After 2 days at a public function, you narrated this, and you also said about the sad plight of the childless, sir. It was a perfect indictment of the media, which is indulging in trivial, sensationalism, and frivolous. Right. I also partially respond, sir. Sir, the other day, when few of us came to your chamber with my leader, Mr. Elamaran Karim, Mr. Binoy Vishwam, and Tiruchi Shiva, he is also a leftist leader, and you were pouring out your reminiscence about the legendary communist leaders. You talked about Bhupesh Gupta, you talked about Indrajit Gupta, A.K. Gopalan, you talked about Somnath Chatterjee, and you said, though you differ in ideology, you would want the leftist movement to survive and to be present in parliament in full vitality and vigor, sir. Sir, one more minute, sir. Sir, when you inaugurated the school in Chennai, because since Shivaji didn't say, I should say that, you quoted renowned Tamil poet Bharatiyar, and you said, it is more virtuous to educate a child than to build 1,000 temples. So that is very relevant, sir. Sir, you have set a benchmark, and I would say it is not an obstacle for your successor, but it's an inspiration. Like Mahatma Gandhi said, sir, as many men has exalted in greatness when they relinquish the chair. As he said, power is of two kinds,
One is obtained by the fear of punishment and other by acts of love. Power based on love is 1,000 times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment, sir. Wish you the best for all your future endeavors, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable members, I have a list before me. We have 32 speakers. Keep the time in mind. And I don't want to cut anybody in between, but at the same time, the duty compels me that I should remind you about the time. And there are many more other than proposed by party also want to say something. We will be able to do justice to them provided if we are able to complete it on time. Now it is Sri Ramnath Thakur. श्रद्धेय सभापति महोदय, जिस तरह एक परिवार का मुखिया सारे सदस्यों को देखभाल करता है, उसी तरह राज्यसभा में आपके आने के बाद सारे सदस्यों को आपने एक गार्जियन की हैसियत से देखा, समझा और उसे दिशा निर्देश दिया। संसदीय जीवन में आपने जो ज्ञान, अनुभव, बुद्धि का जो इस्तेमाल किया, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। आपने 13 सत्रों की अध्यक्षता की और देखा कि सदस्यों का गुस्सा कैसे आपने झेला और कितने अच्छे ढंग से अनुभव के आधार पर उस गुस्सा को शांत किया। आपके अध्यक्षता में 177 बिल पास हुए और समयबद्ध तरीके से आपने बिल का निष्पादन किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से नहीं बिहार के 13 करोड़ जनता की तरफ से, राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनकी तरफ से मैं आपके स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और यह कहना चाहता हूं, किसी रचनाकार ने कहा है, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, पर दिल ये कह रहा है आप पास आ रहे हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रामनाथ जी। श्री डॉक्टर तंबिदुरै। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, முதலில் என் பணிவான நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தங்களுக்கு அன்புடன் அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறேன். Mr. Chairman, sir, I thank the opportunity given to me to make my gratitude to the Honorable Vice President and the Chairman of this House, who is demitting the office today after a long, cherished career spanning over half a decade, starting from your college days, sir. Sir, I recollect the long friendship I have with you since the days you came to the Parliament in 1998. I was Minister for Law and Surface Transport under the able leadership of Sri Vajpayee ji. So I had the opportunity of seeing you in the Rajya Sabha participating in many of its activities. And also, sir, when I
has become the Deputy Speaker of Lok Sabha, support of our Honorable Modi ji and our Amma. You are the Parliament Affairs Minister there. And also, I have seen your hard work and pleasant manner in dealing with the friends and fellow members have been the prime dreams for your steady youth growth, sir. And also, sir, I want to mention the days you have spent in Apollo Hospital when Honorable Chief Minister was in the hospital. You have spent a long time helping us how to recover from the death condition. But unfortunately, she faced that last days of the death in the hospital. You are the instrument there. You went a lot of time to arrange all the arrangements for all funeral and everything. I cannot forget, and our party ADMK cannot forget all these things. How you spent with us those days, sir. I am very grateful to you. So at the same time, sir, as Minister for Rural Development under the able leadership of Modi ji and Parliament Affairs Minister of Urban Development, Housing, Minister for Implementation and other activities, under the poverty elevation, you have given an impeccable administration. Please, please. Santi, initiated several noteworthy reforms in the ministries you have held. Your contribution to the success of the Pradhan Mantri Graman Sadak Yojana is a commendable initiative, sir. And also, sir, as our other friends said, you are a true leader to give importance to all languages, national languages. They are called regional languages, not these national languages, as you said many times, sir. And are given the opportunity, as even Prime Minister others said, to rise and speak in their own languages. That is your initiative, sir. We are appreciating. We won't forget, sir. That's your true federalism is shown that how our Indian culture has to be preserved in the diversity must be strong, that you have said, that we cannot forget. And also, as others said, your speech and your vocabulary, we cannot forget. And you are a very experienced man, sir. And you are a guide and also as a model to us in the coming days. As others said, sir, there is no retirement in your life. Still there is a time. Nowadays, I am having that kind of thinking, sir. You are a vice president now. Vice president is not the end. There are other posts also there. Therefore, you in your public life, it may be a temporary phenomena. You are diminishing the office, but there is the opportunity. God will wish you that you come up once again to guide us in the parliament also in some other capacity. I am hoping that, sir. In that sense, sir, I don't want, as you said, as also I am presiding officer, many 15 years I served in the Lok Sabha. As you instructed, I cannot most of the time. I am once again limit my everything speech. You will have many more opportunities in the future to serve the Mother India. May God bless you in the health, happiness, joy, and all the best wishes, sir. Thank you very much. Nandri, thank you. Sri Farpul Patel. Chairman, sir, I consider it my honor to have known you ever since the days you came to Parliament. You came as a member of this House, and I probably was a member of that House during those days. And I also consider it my privilege to have served under you as the Chairman of this House. I have very many fond memories. And also the fact that you and my leader Sharad Pawar ji also enjoy a very special relationship, a very special bond, both because of your deep love for rural India, the agricultural community, and that is, I'm sure, a big binding factor between the two of you. Sir, you have always been very
kind, very supportive. I have seen you in, as I said, in different roles. When you were minister in the government, Vajpayee's government, as the rural development minister, we would come many a times with our constituency works, and you would be more than forthcoming and more than willing to help and support any good work which any member of parliament, irrespective of party affiliations, would come to you. These are qualities, sir, which don't come to everybody naturally, but I think kind of... आप पहले ये निकाल के सुनिए, शांति से बैठिए. I don't think, sir, these qualities have to be acquired. They are natural to you, that you have been very, very supportive of all members of parliament. Even here we have seen, as the chairman, sir, you have encouraged many new members, have acknowledged that fact, that how you have been giving them opportunities to speak about not only their area but in national interest, in many other areas of interest which members of parliament may have, and also the fact that you have been also troubled a lot by us as a house. I've seen many emotional moments which you have gone through, and actually I tell you, sir, I've been pained whenever I have seen sometimes a tear or two in your eye. I know the anguish and the dilemma which you were going through, and I'm sure members also acknowledged it. Maybe there were political compulsions, but as far as I am concerned, or my party and Sharad Pawar ji are concerned, you know very well, sir, you have drawn a Lakshman Rekha for decorum in this parliament, and which we have always adhered to. I've never given you, or our party has never given you, any reason to feel agitated or feel angry about our conduct. But nonetheless, sir, I think it is many a thing one can speak, many have spoken, and you have already mentioned about the paucity of time. So all I can say, sir, we wish you all the very best, sir. आपके जीवन में बहुत अभी और कुछ योगदान आपको इस देश के लिए करना बाकी है, सर. तो आप यहाँ से जाएं और कोई जगह पर अपने कार्य की शुरुआत करें, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, सर, कि आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, लेकिन कभी हम लोगों को अलविदा ना कहे. प्रफुल्ल जी, श्री शिवसेना कोई है? नहीं. श्री राम गोपाल यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव. श्रीमान, इस तरह के अवसरों पर मैं अक्सर अपनी बात पूरी कभी कह नहीं पाता. मैंने इससे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर अब तक सभी माननीय सभापतियों के विदाई फेयरवेल इस कार्यक्रम को देखा है, लेकिन चूंकि आपसे व्यक्तिगत मेरा अटैचमेंट बहुत रहा, आपने जैसा स्नेह आपसे मुझे मिला वैसा किसी से पहले नहीं मिला था. हालांकि माननीय भैरव सिंह जी से भी बहुत अच्छे हमारे रिश्ते रहे, लेकिन आज जो मुझे महसूस हो रहा है आपके विदाई समारोह में, ऐसा अंदर से मुझे परेशानी कभी नहीं हुई. मैं मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने जो कुछ कहा उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए यही कहना चाहूँगा कि आज आप सारे प्रोटोकॉल से और सारे बंधनों से मुक्त हो रहे हैं. इसलिए आगे आने वाले समय में आप अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति से स्वतंत्रता पूर्वक जो लोगों को संदेश दे सकते हों, चाहे यूनिवर्सिटीज में जाके जब भी जाएंगे आपको तो बुलाएंगे ही लोग, और आप अपनी बात कहने में बहुत सिद्धहस्त हैं ही, तो उसमें कोई बंधन न हो. देश के हित में, संविधान के हित में जब भी कुछ कहना पड़े, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उसी तरीके से कहेंगे. आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार ठीक तरीके से रहे, यही मेरी कामना है.
धन्यवाद रामगोपाल जी। श्री विनय विश्वम। Sir, these moments are really such moments where we feel that each words are so valuable. We find difficult to find the apt words to express our hearts. Sir, I remember the first day when I made a call to you. At that time, I was already designate to become a member of the Rajya Sabha. But you were so kind to allow me to come to your house to meet you in person. I came there. I thought that you will give me 2 minutes or 3 minutes as you do here. But on that day, you were so benevolent. You were so kind to give me 30 to 40 minutes to talk. You talked about your past, your RSS days, the days in which you walked barefooted through the villages of Southern India, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra, of course. Then you told me, ideologies may differ, but man, humankind, the greatness of that you mentioned to me. And on that day, you told the same thing that Britas was telling here. You told me about the glorious past of the communists in the Parliament of India. You mentioned the names of Prabhesh Gupta, Indrajit Gupta, Jyotirmai Basu, Kiran Mukherjee, of course. You mentioned those names. And you told opposition has a role to play in democracy. And you told communists may be small in number. And you mentioned one more thing. Why the communists are remaining separated? You demanded for the communist unity, for which my party stands. And I remember, you very correctly told communists in that way can play a better role for the communists and for the democracy of this country. And so many such fond memories are there. Sir, you have scolded a lot in this house when we made some slogans here, when we made some ruckus, you may call it. I remember it. It was, sir, not purposeful. When I saw your face with sadness, I tell you now, I felt so sad, as if my uncle is feeling sad on me. That feeling you have engaged on all of us. Such is true that we differed on so many issues. But the man in you, I should tell, is a man who should be mentioned always in capital letters. Sir, once you made an open call to the public that the public should teach a lesson to all the members who make ruckus in the house. It was covered by all the newspapers. I was forced to write an article because my mind told me it should not go unnoticed. I was opposing your viewpoints. In that article I wrote, how you find us, how you treat this house. I wrote, you may have scolded us, you might have differed with us, but you always feel that we are your people and you feel this house as your own house and we feel that you are the guardian of this house. With that feeling, I differed with you. I strongly opposed you. And that opposition is ideological. But our love for you, regard for you, respect for you, sir, it is unchanged. Nobody can change it. Sir, I can tell you one more thing. When I look to the press gallery, I think, why a Democrat like you still keep that house, that launch for the journalists remain like this? COVID days it was okay, but now there is no COVID. So please see that whatever you can do afterwards, the house should be opened for the media. Without the media,
Without the public debates, without taking the message to the public, there is no meaning for a parliament. Right. I know that you understand it. Sir, while concluding, I would like to read the following, which I wrote here. Sir, thank you for upholding the greatness of this great country. Thank you for the commitments that you have cherished for the values of democracy. Thank you for the agonies that you might have experienced in your noble struggle to remain as a secular democrat in this difficult political landscape. Thank you for the tears that we showed in your eyes. That tears show who you are. I bow my head. Sir, if you allow me, I embrace you with all love, all respect, all affection, with the feeling that you are somebody so close to our hearts. I conclude, sir. Thank you. Thank you very much. So, Sri Ramji. Ramji. धन्यवाद सर। जाहिर सी बात है सर, विदाई एक भावुक पल होता है और इस भावुक पल में ये जरूर होता है कि हम जैसे युवा और तमाम लोग कि उस व्यक्ति से क्या सीखते हैं। और सर, हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका जीवन का जो संघर्ष जो हमने पढ़ा कि जो आपका जय आंध्रा मूवमेंट रहा हो और चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी की छात्र समिति संघर्ष समिति रही हो, इन सारे मूवमेंटों में आपने बड़ा ही संघर्ष किया और आंध्रा के नेल्लोर गांव से एक छोटे से गांव में जन्म लेकर के आपने इस देश के उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया है। ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत सलमान जी है और बहुत सारी बातें मेरे पास नहीं हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी, आपका जो देश प्रेम है वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है और हम सबको प्रेरणा हमेशा देता रहेगा और हम सबको आपकी याद आती रहेगी। और हम सभी लोग आपके जीवन की शुभकामनाएं करते हैं कि आगे फ्यूचर में भी आप ऐसे स्वस्थ रहें और हम सबसे कनेक्ट रहें। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद राम जी। श्री कनकमेड रविंद्र कुमार। आगे हो ना हो मुलाकात साथ में रहेंगे। Thank you, sir. I have a great privilege to speak on this occasion, but with heavy heart. Sir, your journey as presiding officer of this August House commenced on 11th August 2017. After completing your term, you will demitting the office on 10th August. Your entire tenure as presiding officer of this August House is very eventful and remarkable with your innovations. Sir, I have learned so many things under your leadership and how to become a good parliamentarian. And you are always reminded as a guiding force to me and to all the members of this August House, and always motivated the members of this House to give their best discussion, passing of bill, and whatever the business that were transacted in this House. Sir, I don't have any hesitation to say that you are a pride of the country in general, particularly Telugu people in particular. Sir, the way you promoted usage of Indian languages in the House and encouraged more and more members, sir, use their mother tongue in raising the issues in the House, appreciated by one and all. Sir, I could recollect that the bonding with you, I had its genesis during the student life as a leader of the student leader and or the leader of Jayandra movement itself, starting from Nellore district and other. The bonding started during the student life, continued between us till now. It will continue forever. Sir, the books written by you during your tenure as presiding officer of this August House stands testimony to the scholarly aptitude you have within yourself. You never missed any forums to give speech on wide-ranging subjects, which shows the deep knowledge you have in each and every subject. Under your auspicious leadership, we had the privilege of online submissions of various notices through e-notices portal. Many efforts were made to reduce the usage of the paper in the day-to-day functioning of the House. Sir,
you have been rendering marvelous services to the particularly Telugu states under a Swarna Bharati Trust. And now, though you are retiring from this office, according to your words, but you are not tired. Sir, I hope that you will continue the services and also render service to the public at large without any restrictions at present. Sir, finally, sir, on one occasion I have seen an angry from you, but I never witnessed, and that only recently when the House was frequently disrupted, that you have expressed your anguish by saying that my operation depends on your cooperation, otherwise there will be separation. So like that, sir, you are always encouraging the debates, treasury benches and also the opposition benches, and thank you for your guidance, and it will, I hope that your guidance will continue forever. Thank you for giving us. Thank you. Ramdas ji. Ramdas ji Achwale. सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपने हमें विश्वास दिया है। आपने हमें इतना विश्वास दिया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे। आपने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। आपने मुझे मौका दिया हर बार, आपने मुझे मौका दिया हर बार, इसलिए मैं करता रहा कांग्रेस पर वार। आज मत करिए। आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, इसलिए आप आइए फिर एक बार। जो आते थे बार बार वेल, जो आते थे बार बार वेल, उनको सस्पेंड करके आपने उनका बंद कर दिया था खेल। कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, इसलिए अभी वो नहीं आएंगे बेल। ठीक है, चलो पार्टी को छोड़िए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आपका अंदाज बहुत अच्छा था, आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे, आप गड़बड़ करने वालों को मतलब 1 मिनट के अंदर हाउस एडजन करते थे, उनको ज्यादा हंगामा करने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन ठीक बात है कि आप एक स्टडीड थे, आप हाउस चलाने के बारे में बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा। 5 साल तक आप हमारे साथ रहे और सभी मेंबर को आपने मौका देने का काम भी आपने किया है। टाइम कम होने से हमें भी, मैं जब बोलता था तब आप बेल बजाते थे, आप बेल बजाते थे, मैं बोलते रहता था, और लेकिन हर बहुत बार आपने मुझे भी मौका दे दिया है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान निर्माता की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, आपका स्पीच सुनते रहेंगे। इस हाउस में तो आपका स्पीच हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाहर भी हम आपको हमेशा बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपने हाउस बहुत अच्छा चलाया, इसीलिए आपको शुभकामना देता हूं। जय भीम, जय भारत। राइट, राम जी। श्री वीरेंद्र वैश्य, you have only 2 minutes. Honorable Chairman, sir, on behalf of my party, Assam Gana Parishad, I'm standing here today not to say goodbye or farewell to you, sir,
Speaker, sir, goodbye and farewell is not applicable to you, sir. Sir, in my student life, when I took part in the debate, once I got a topic, the topic of debate was that we cannot say goodbye to Mahatma. Sir, we cannot say goodbye to you because your work, your advice, your guidance, always remembering you, sir. Sir, in my parliamentary life, I have seen you as a senior minister, as a senior colleague of this House, and as a honorable chairman of this House, sir. Sir, as a Minister of Rural Development, you are the most successful minister, and you are a very learned, sir. You are a very learned person, sir, and it was already reflected in your speeches in the Parliament, from where we can learn many things in our life, sir. I remember, sir, in the year 2014, when I was in the 2009, when I was the member of this House, when I spoken to any topic, from this, sir, from the first row, sir, you always encourage us, sir. Sir, you are a very strong supporter, strong motivator of the mother tongue, sir, mother language, sir. Sir, I today remember when I spoken in the House on learned singer Dr. Bhupen Hazarika, you have given the reply in Assamese, sir. So this is the recognition to my language, sir. This is the recognition to my mother tongue, sir. This is the language to 3 crore people of Assam, sir. Sir, you have told me 2 minutes, sir. Today, definitely, sir, I follow your direction. Sir, I, on behalf of people of Assam, on behalf of entire northeastern region, we pray Ma Kamakya to give you bless for your good health, speedy health, and you continues to contribute to our society, in our democracy, in our education system, in our parliamentary system. Thank you. Thank you very much, sir. The House is adjourned to meet at 2:05. 2:05. Thank you. Sorry. There's no way to. Against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. As it was announced by the Deputy Chairman earlier, there will not be question hour or any other issues except the special mentions which will be taken up after the scheduled time of the House being concluded. Farewell to the Chairman Rajya Sabha, Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, आज हम सब सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी को
उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए, उनमें करीब करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही है, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी ये लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स, बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड revered and never countered. कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में बीट भी होता है और वेट भी होता है।
वार्मथ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, अपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे। ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा, क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती हैं। ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है। ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी ये निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपवर्ड जर्नी के लिए याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह
राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है। मैं आपके इन मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूं। पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दौरान शोरगुल होने लगे तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। इस सदन को दूसरे सदन से आए विधेयकों पर निश्चित रूप से सहमति या असहमति का अधिकार है। यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है, पर उन्हें रोकने की, बाधित करने की परिकल्पना हमारे लोकतंत्र में नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आपके लिए इस सदन के सम्मान का उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लेगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपनी जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन।
माननीय सभापति जी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से मेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी बातें आपके सामने रखी। और ये ऐसा भी होता है, जो पहला वक्ता बात करते हैं ये बफे सिस्टम टाइप, जो पहले जाते हैं पंक्ति में उनको ज़्यादा खाना मिलता है, जो बाद में वहाँ पर जाएंगे थोड़ा फिर उधर इधर की बातें बोलते हैं। लेकिन मैं